just under 10,000 crores of central government will go, central resources will go to Gujarat. Just under 4,000 crores of that is direct assistance for the state government's plan. It's well known that Gujarat is one of our better performing states. The general discussion in terms of economic growth, etc., we have noted that the performance has been good in Gujarat. A lot of discussion on the social sector. I think generally it has been our view that Gujarat needs, in order to bring its social sector performance up to the economic side, it needs to pay some special attention in this area. I'm happy to say that the state government has indicated that it is also giving emphasis in those areas, and they have given a full explanation of what they are doing and what they expect will have the relevant effects. State government has raised a number of issues which the central government should act on, where there are slow decision making, where faster action could remove impediments on development. We have noted those and we will be communicating with that. One of the concerns that the government has relates to whether we cannot introduce greater flexibility in the centrally sponsored schemes. We agree with that view. This was discussed in the National Development Council when it met to approve the draft of the plan. And I have informed the Chief Minister that Planning Commission is taking a note to the Cabinet, which I hope will be considered possibly tomorrow, which introduces a lot of flexibility in each of the centrally sponsored schemes. So I think if that note is approved, then I think not just for Gujarat but for all states, we will have made a major step forward in giving greater flexibility to the states, which is something that in the Planning Commission we are very much in favor of. आज प्लानिंग कमीशन के साथ गुजरात के प्लान साइट संबंध में मीटिंग थी। ओरिजिनली जब हमने सोचा था तब 58,500 करोड़ रुपीस का हमारा प्लान साइज के लिए हमने बजट में सोचा था, लेकिन प्लानिंग कमीशन को लगता है कि गुजरात ज्यादा कैपेबल है, उसने और आगे बढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन ने 59,000 करोड़ रुपीस का हमारा प्लान साइज को मंजूर किया है, उसको स्वीकार किया है। भारत के विकास में गुजरात का बहुत बड़ा अहम रोल है। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से हम लोग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं। गुजरात सरकार ने अपने इस बजट में 42% अलॉटमेंट सोशल सेक्टर को किया है, क्योंकि हमारा मोटो रहा है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, ट्राइबल हो, समाज के सभी पिछड़े वर्गों को विकास का सर्वाधिक लाभ मिले, इसलिए हमारे प्लान में से 42% अमाउंट हमने सोशल सेक्टर को के लिए हमने रखी है। थैंक यू मित्रों, जितना बात मुझे करना था। थैंक यू। उन सारे विषयों का डिस्कशन हो गया और अहलुवालिया जी ने जवाब भी दे दिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।